A very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So starting with the analysis video for 17th of September. So आज के जो कुछ important topics हम लेने वाले हैं in detail. Firstly, as you can see in front of you, saffron, it is the new silver in Kashmir highlands. So we'll discuss in detail about this, how this is helping again the livelihood opportunities in generating new and better sustainable livelihood opportunities in Jammu and Kashmir. Obviously, this would play an important role in terms of strengthening the economy of the Union Territory. Second topic is निपा वायरस आउटब्रेक्स हमें देखने को मिल रहे हैं. सवाल ये उठता है कि केरला में ही क्यों हो रहे हैं और किसी स्टेट में क्यों नहीं हो रहे हैं. So we'll discuss this. So firstly, you can see article जो आपके सामने है, artificial intelligence cameras gun for the poachers. So artificial intelligence, again, one of the important applications, ki how it is helping us in easily spotting and identifying the animal poachers. So wildlife officials, they're one of the most populous tiger zones in India. They are experimenting with this new set of camera traps. And obviously here, जो technology हम use कर रहे हैं, that is artificial intelligence. So herein, basically, इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी फिटेड है, दैट इज इंफ्रारेड सेंसर्स डिप्लॉयड इन द फॉरेस्ट टू काउंट द वाइल्ड एनिमल्स और इवन टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ द पोटेंशियल पोचर्स, सो दैट हार्नेसेस द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इंफ्रारेड सेंसर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरास के अंदर डिप्लॉयड है, जो हमें easily identify करने में help करते हैं, specifically the animal poachers. So right now it is basically एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में चीजें हम टेस्ट कर रहे हैं. एंड राइट नाउ जहां जिस एरिया में वी आर टेस्टिंग दिस थिंग, दैट इंक्लूड्स द कान्हा पेंच कॉरिडोर इन मध्य प्रदेश. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, आपको उनकी लोकेशन पता होना इंपॉर्टेंट है. कौन सी स्टेट में मैक्सिमम नंबर लोकेटेड है, दैट इज इंपॉर्टेंट. कौन सी स्टेट में हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइगर्स मिलते हैं, दैट इज मध्य प्रदेश. एंड अगेन टाइगर सेंसस का जो डेटा है, जो रिजल्ट्स है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. So name of these camera is the Trail Guard AI Camera Alert System. So Indian knowledge system की अगर हम बात करें, under the education ministry, they have developed 6 types of indoor games जो again हमारी indigenous knowledge के साथ rooted है. So this will be introduced in schools from the next academic year. So in a way, trying to make education much more interesting, so that उस interesting process के through we can impart the education and the knowledge that is required in a much more interesting manner. And obviously through this process, वो बच्चों के लिए उस चीज को grasp करना, learn करना, and that to, you know, remember that thing for a longer time period would be helpful. So board games like we used to play chess, we used to play Samsidi, it looks like a regular set of snakes and ladders, but इस game के अंदर इसको इतना interesting बना दिया कि जो again आपको education देनी थी या जो knowledge provide करनी थी, instead of directly teaching it, आप game के through इसको transmit करोगे to the students. So this is the aim of the national education policy. It is to promote creativity and multifaceted growth. So this is one part of it, one process through which you can impart or we can promote more creativity in the education system. So when we talk about infrastructure development in India, तो आपके mind में firstly you need to create dimensions कि कौन-कौन से dimensions हैं जहाँ पे again infrastructure development की है. तो सबसे important again you can firstly talk about defense sector. वहाँ पे आप arms and ammunition export जो हमने किया, we have generated around rupees 16,000 crores from that. And then one of the major attacks they've been prevented from cities. Also cross-border terrorism attempts, they were effectively countered. Lightweight helicopters, again you can talk about investment in that.
इकोनॉमी में अगर आप बात करो, वी हैव अचीव्ड द स्पॉट ऑफ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. गुड्स एक्सपोर्ट दे हैव टच्ड अ नेवर सीन बिफोर मार्क ऑफ $448 बिलियन. बट साथ के साथ जब हम यहाँ पे अगेन अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस हम कर चुके हैं, आपको कंसर्न्स भी पता होना इंपॉर्टेंट है. सो कंसर्न्स की अगर आप बात कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं कि इंडिया, we have achieved the spot of being the fifth largest economy in the world. So at the same time, yesterday also we discussed on this note कि GDP should not be the only measure when we talk about assessing and analyzing the economic performance of any country. So और बाकी जो important indicators के बारे में हमने बात करी थी, that is at the same time you can't just rely upon the numbers. So it is important कि आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दोनों को साथ में मिला के देखें. आप बात करें कि इंडिया में सोशल एंड इकोनॉमिक एंड इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है डिस्पाइट बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. सो ये जो गैप है, हमें इस गैप को रिड्यूस, इस गैप को फिल करने की जरूरत है. And when we talk about the export sector, so that also we assessed yesterday कि जो हमारा goods export sector है, उसमें हमें decline देखने को मिल रहा है. So when we talk about the challenges to the goods export, उसमें आप बात करोगे कि जो global demand है, that is weakening. Then we are seeing कि even eurozone, we say कि it might be heading towards a recession also. So that is another risk when we talk about the market of Europe. Apart from this geopolitical risk की आप बात कर सकते हो because of the Russia-Ukraine war, that is also in a way hampering the demand for exports because उसकी वजह से जो inflation हुई है, that has reduced the purchasing power of the people. So you can like think about in a comprehensive manner whenever you're going through any kind of advertisement. Then आप इंडिया में digitalization जो हुई है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. उसकी वजह से गेन जो हमें बूस्ट मिला है, नॉट जस्ट नेशनल लेवल पे बट इवन you can talk about कि UPI is going international, it is going global. So जो चीज 10 से 15 साल के अंदर होनी थी, वो कोविड-19 की वजह से 3 साल के अंदर हो गई. So अगेन ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में आप बात कर सकते हो. देन वुमेन्स वेलफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आज के टाइम में. वुमेन लेड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, important रोल जो वुमेन प्ले कर सकती हैं क्लाइमेट चेंज सेक्टर में. एंड ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं when we saw कि Chandrayaan-3 मिशन became successful. So even role of women in the Indian space sector. So specifically यहाँ पे आपको minutely हमें चीजें पता होना इंपॉर्टेंट है. So here we see जब हम एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात करते हैं तो वन ऑफ देम यू कैन सी मैप के ऊपर मैप बस डिपिक्टेड है नीलगिरीज में. यू कैन सी तमिलनाडु स्टेट की बात करें तो सेगुर एलिफेंट कॉरिडोर ये जो है इट इज collective design for the 5 separate corridors. So यहाँ पे again 5 regions भी mentioned है, names are also mentioned. So these are again the Moyor to Avaralla, then Masinagudi to Singara, Singaro to Bokkapuram, then Kalhatti to Segur, and Mavalanala to Chemanthanam. So together they measure around 23 kilometer in stretch, and it was the first corridor to be notified in the country. So elephant corridors again ये हमें help करेंगी in reducing the man-animal conflict. Apart from this, we can come up with such corridors in different states where we find elephants. And again elephants इंडिया में कहाँ मिलते हैं ये हमें पता होना important है. एशियन elephants कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में we get that in the which is located in the eastern Ghats. And apart from that Segur plateau region. तो geography के perspective से इस article में बहुत we can say सारी important terms mentioned है. तो आपको again you need to spot them on the map. सेगूर प्लाटू रीजन कहाँ लोकेटेड है? सेगूर एलिफेंट कॉरिडोर यहाँ पे मैप है हमारे लिए. देन अपार्ट फ्रॉम दिस एज आई मेंशन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है. ईस्टर्न घाट्स में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट्स मिलके ईस्टर्न घाट्स बनाती हैं.
सिमिलरली वेस्टर्न घाट्स का भी आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। इनको जो अगेन कंसेप्चुअल चीजें हैं, विच ऑफ द टू इज हायर देन व्हेन वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी, कहाँ पे आपको ज्यादा मिलती हैं, दोनों कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ये हमें पता होना इम्पोर्टेंट है। आपको अगेन कोस्टल रीजन कौन से घाट्स पे मिलती है, ईस्टर्न घाट्स पे कि वेस्टर्न घाट्स पे, कोस्टल रीजन इन द सेंस कि वन ऑफ देम यू गेट more of, we can say, beaches, and at one you have like this kind of subsidence zone. So you can see Madras में जो crocodile bank है, it conducts snake bite awareness programs. So snakes, they are one of the biggest reasons for deaths due to wildlife in India, not just in Madras, in India. And that is why it is important कि we need to generate awareness about that, कि अगर suppose a snake bites, तो again फिर आपको क्या किस तरीके से react करना चाहिए, क्या steps आपको लेने चाहिए so that you can save a person's life. So snake conservation, snake bite mitigation. Here we have the project leader, who's the project leader at the Madras Crocodile Bank Trust. So to highlight widespread occurrences of snake bites. So this Madras Crocodile Bank Trust, they have been conducting the snake bite awareness programs for students for the rural communities from several years. This is not a new initiative. And again, root cause kya hai? Problem of snake bite, it has several root causes. So even after reaching the hospitals also, doctors, they are hesitant to give any anti-venom as it may cause allergies also, and the primary health centers, they might not have ventilator support as well. So again, when we talk about building the resilience at the primary healthcare sector level is important. Specifically, again, when we know कि snake bite incidences India में, that is one of the biggest reasons for deaths due to wildlife in India. So we need to be prepared. Our primary healthcare sector needs to be well prepared in order to deal with such types of cases. Again, क्या precautions लिए जाने चाहिए? So awareness about that, it is important to prevent snakes from entering the homes as well. And again, if you have any such incidents, unfortunately, कि snake bites you or any person, you are well aware कि क्या steps लिए जाने चाहिए so that you can save the person's life, वो भी important है. So it is based on all these aspects. So we're celebrating 100th birth anniversary of M. Vishwanathan. So her book and online education series has been marked on this. So he is a pioneer of diabetes treatment in India. Now again, diabetes से related conceptual clarity होना हमें important है. And apart from this, how things they started in India, how he played an important role. So वो सब important हो जाता है, and you can just read about him more. Again, now we'll talk about the Center for Peninsular and Marine Fish Genetic Resources. उन्होंने 3 ऐसे टाइप के वायरसेस डिस्कवर किए हैं जो अगेन जो ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री है उसके लिए रिस्की हो सकते हैं. So the names are mentioned here, you can just go through them, and they can threaten the ornamental fish industry. So viruses, they're not usually found in Kerala, but if the measures are not taken to contain them, they can land the ornamental fish industry in trouble. And again, it is going to be a worry for the farmers also. जो लोग again, जिन लोगों का ये एक livelihood option है, एक livelihood है लोगों के लिए, and apart from this, अगर ये virus spread हो जाते हैं तो again उनकी life disrupt हो सकती है. So it is important कि again now the center
जिन्होंने 3 वायरसेस को डिस्कवर किया है, they need to work closely with the local fish farmers, traders and regulatory authorities so that strategies हम develop कर सके in order for disease prevention and management, so that again we can ensure continued growth and prosperity of the ornamental fish industry in not just Kerala but even in other states also जहाँ पे risk exist करता है. Then you can locate the Chalakudi river and we see ki again 2 species of endangered catfish have been identified in this Chalakudi river stretch. So India Middle East European Union corridor or the West Asia Economic Corridor की अगर हम बात करें, it is going to have multiple routes, but again at the same time hurdles भी exist करते हैं. तो firstly it is important कि we understand the map first. So you can see it is going to connect India from Mumbai and Mundra port and even Kandla, which is in Gujarat. So Heron, it would be also connecting the land route. You can say ki the sorry. So this would be the sea route, these dotted line. It would be the sea links. So India would be connected with UAE, will be connected here with Saudi Arabia and different places and ports they are mentioned. So the name of these ports, they become important for us. You need to know about arranging them in again north to south direction or again east to west direction or west to east direction. You need to know about that, which is the northernmost, which is the southernmost. Then from again UAE, it would be further connecting with other countries and then Saudi Arabia. So major stretch lies in Saudi Arabia. So herein we see ki the red lines, they are for the missing lines. So we need to build connectivity between these regions. The blue line are the existing lines which are already functional. But again, they're not connected with all the regions in a comprehensive and in a smoother manner. And these blue dotted line, these are under construction stretches. And then it would be also connecting with the Israel in the Haifa port. It is located in Israel. And again, Jordan would also be connected with this, but there is again missing line when we talk about the connectivity between Saudi Arabia via Jordan to Israel. So some again risk are there, or we can say some challenges are also there, even from the perspective of maintaining security all along this corridor. So the map shows the multiple routes exist. They've been considered for the India Middle East European Union corridor. So several ports, including 3 in India and 1 in Israel, अभी shortlist किए गए हैं कि again यहाँ से it can either start from here or here also and or from both the places. And there are missing links also in many of the proposed routes as well. So rail connectivity upgrade की जा रही है West Asia की जब हम overall level पे बात करें तो common standards again उनको maintain करना when we talk about the construction and the technology across this corridor. So you need to know fancy countries they are going to be part of it. So days after we saw India, US, Saudi Arabia, UAE, other countries, we have launched this West Asia Economic Corridor. Details are still being ironed out. So basically we have started in a way working upon it. So apart from this, जो locations हैं वो हमारे लिए important हो जाती है from the perspective of map work क्योंकि ऐसे questions prelims में पूछे जा रहे हैं. Apart from this, you can talk about किस तरीके से overall level पे ये हमें help करेगा in terms of boosting our trade. Specifically जब हम बात करते हैं right now global challenges exist karte when we talk about promotion of exports. So although it is going to take time to get functional, but again आने वाले time में ये हमें काफी help करेगा. उसके अलावा when we talk about the Belt and Road Initiative of China, so this is one of the proposed alternative to that. So this is there. So again it is going to face competition from BRI. वो एक challenge है. And जो missing links हैं वो भी हमारे लिए चैलेंज है कि उनके बीच में वेल कनेक्टिविटी डेवलप करना क्योंकि वहां पे अगेन कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं which can become an important factor in ensuring smooth construction activities along these missing links. And then security, that is also very important.
So center publishes the disability database stripped of the socio-economic figures. So ministry doubts quality of socio-economic data that is being collected, so it is not being released. And not many people they have filled their socio-economic fields as they were not mandatory. So again, because of that, quality has been compromised. And earlier this year, a parliamentary panel they had also raised doubts about the department's ability to collect accurate population through the UDID mechanism in time. So basic purpose जो है of the form that is to get disability certificate, and also we cannot afford to make the form too lengthy by seeking information we cannot verify. तो कुछ again ऐसे nuances हैं जब आप बात करते हो making or structuring a particular form जो information आपको चाहिए and you are collecting such information जिसको आप verify नहीं कर सकते हो, तो इस information को आप आगे policy making में use नहीं कर पाओगे. So through this unique disability ID एक mechanism है through which the data is being collected so that people जो disabled people especially abled people हैं उनको certificate दिया जा सके. But at the same time having the socio-economic data is also important so that हम समझ सके कि कौन से ऐसे areas हैं जहाँ पे उनके लिए employment opportunities open up हो रही हैं. Again, severity of their economic status we can get to know about that अगर quality of the data is not compromised, किस तरीके से again social differences उनको face करने को मिल रहे हैं, that is important. And apart from this then we can also talk about कि कैसे हम when we talk about creating an inclusive society तो और क्या measures ले सकते हैं. Specifically again infrastructure development की हम बात करते हैं, ensuring कि the places they are disabled friendly. We need to ensure कि वो again ground level पे वो चीजें implement होनी चाहिए. Just being on papers it is not going to help these people. And employment opportunities एक important area है जहाँ पे हमारा focus होना important है. So different species, they are at risk. And right now here, this article is talking about European bumblebee species. They are threatened. Around 75% of them are threatened. So it is talking about the European species. So India के perspective से अगर हम सोचो तो इतना important नहीं है, but अगर आप again सोचो कि इंडिया में ऐसे कौन से species हैं जिनका risk of extinction is growing, so that is important for us to know. एंड फैक्टर्स क्या है जो वो द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं. सो अगेन उसको रिड्यूस करना, मिटिगेट करना, प्रिवेंट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो निपा वायरस आउटब्रेक्स केरला में ही क्यों देखने को मिल रहे हैं. So with the fruit bats positive for the Nipah virus antibody seen in other states, it is likely that जो Nipah virus infection and deaths हो रही है, that may be going undetected in other states while they get picked up in Kerala, especially in this particular Kozhikode district of Kerala. So ये कुछ possibilities हैं. So alert healthcare system detects Nipah outbreaks. So the route of Nipah virus transmission from bats to humans, as we say कि Nipah virus एक zoonotic disease है. Zoonotic मतलब it spreads from animals to humans and साथ के साथ human to human transmission भी होता है. So as it spreads from bats to humans, it has not been clearly established in Kerala. So the Nipah virus outbreaks Kerala में अगर हम देखें previously 2018, 2021, 2023 में देखने को मिले हैं. And 2019 आउटब्रेक जो था वो था एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में. सो आप देखोगे बेसिकली 3 ऐसे जो आउटब्रेक्स हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हुए हैं. तो अगेन कुछ स्पेसिफिक रीजन होगा कि जिसकी वजह से वो हमें अगेन केरला में भी सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है. Then again, why we are seeing more number of such outbreaks, that is because जो virus है that has now become endemic in the bats in Kerala only, or due to thorough investigation of undiagnosed fever cases for the possible Nipah virus infection, or both of these reasons might be possible. So except in NIV Pune,
इंडिया में और कोई भी निपा वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है. सो केरला इट स्क्रीन्स फॉर द निपा वायरस रूटीनली इन अ मॉलिक्यूलर लैब आल्सो. सो अगेन वहां पे डिटेक्शन ऑफिशियल हो जाता है या वो कंफर्म हो जाता है. बट सिंस बाकी स्टेट्स में, बाकी इंडिया में और कहीं भी ये टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो टेस्टिंग ही नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि वेदर बाकी स्टेट्स में, अदर रीजन्स पे भी निपा आउटब्रेक्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. Then symptoms की बात करें तो mostly we see respiratory symptoms and they're not reported anywhere in the world before. So again, symptoms में भी we are not having any particular definite symptoms कि ये symptoms होते होते वहां पे भी हमें changes देखने को मिल रहे हैं. एंड लेटेस्ट आउटब्रेक में अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन पॉसिबल इंडेक्स, इट सेज कि क्लस्टरिंग ऑफ केसेस, अनयूजुअल सिम्टम्स, प्रॉक्सिमिटी टू 2018 आउटब्रेक एपिसेंटर, इट लेड टू द टेस्टिंग फॉर द निपा वायरस एंड दैट्स हाउ वी वर एबल टू डिटेक्ट दिस. सो ओवरऑल यहाँ पे तो हम सिर्फ निपा वायरस आउटब्रेक की बात कर रहे थे. तो वी नीड टू थिंक मोर इन टर्म्स ऑफ overall level में, is India prepared to deal with, is our healthcare system prepared to deal with any future pandemics? अगर वो again COVID-19 वाले scale and severity वाले level पे होते हैं. निपा वायरस सिर्फ केरला में है तो again केरला also needs to be prepared क्योंकि fourth such outbreak हमें देखने को मिल रहा है, that too in a specific district. So अगेन क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए पहले, अगर हमने उन पे काम किया तो उनके क्या हमें रिजल्ट्स देखने को मिले. सो अगेन दीज इट इज पार्ट ऑफ रूटीन एक्सरसाइज बिकॉज अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वायरस इट has become endemic to the bats in Kerala. So it needs to be continued. And again overall level पे जब हम बात करें तो how we can again, अगर हम we are not well prepared to deal with the future pandemics, so what steps needs to be taken. And again यहाँ पे health of the primary healthcare sector becomes very very important. It is going to play a major role क्योंकि local level पे, yeah, we can say that is the first level where people have that interaction with the healthcare system. So that needs to be strengthened and made much more resilient and robust. And again, we need quick responses. Global Biofuels Alliances. So again, G20 Summit 2023 में announce की गई. So what type of biofuel is the alliance going to concentrate on? क्योंकि different types of biofuels exist करते हैं, तो ये alliance किस पे ज्यादा focus करेगी? Why are countries trying to find alternatives? क्यों हम फ्यूल के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के बारे में मतलब ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा बेस्ट सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव जो हमें मिल जाए, लेकिन हम क्यों ढूंढ रहे हैं, सवाल ये उठता है. So again जो alliance announce किया गया, the name is Global Biofuels Alliance G20 में. So here we see the founding members, three founding members हैं, India, US and Brazil. So ये जो factual चीजें they are important for prelims. So they were joined by other countries which includes Argentina, Canada, Italy and South Africa, who are also G20 members. So biofuels होते क्या? So International Energy Agency जो है, they define biofuels as liquid fuels which are derived from biomass and they're used as an alternative to the fossil fuel based liquid transportation fuels such as gasoline, diesel or the aviation fuels. So again biofuels जो हैं, they are only liquid fuels. ये important है to remember this thing. They're derived from the biomass and they're seen as an alternative to fossil fuel based fuels. So are biofuels alternative to fossil fuels or not? क्या ये fossil fuels का एक sustainable alternative हो सकते हैं? So experts का मानना ये है कि they make a distinction between biofuels and sustainable biofuels. So biofuels में भी कुछ ऐसे particular biofuels हैं जो sustainable नहीं है. So जो अगर हम simply बात करें biofuels की, तो they are derived from crops which are grown specifically to produce biofuels like sugarcane, corn, soybean. And जब हम sustainable biofuels की बात करते हैं, तो they are from agricultural waste. They're derived from agricultural waste. They are used for like cooking oil and processed animal residues like fats. So अगर खाली biofuels की बात करें तो they are referred as to the first generation ethanol या फिर first generation biofuel, and जो sustainable biofuels है they are the second generation biofuels. So जो distinction है दोनों के बीच में, this has again
इसके ऊपर और ज्यादा फोकस आए, क्योंकि अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल बायोफ्यूल, बिकॉज हमें कार्बन एमिशंस रिड्यूस करना है, वी टॉक अबाउट कार्बन न्यूट्रलिटी, वी टॉक अबाउट जीरो कार्बन। सो हमारे लिए इसलिए सस्टेनेबल बायोफ्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट फोकसिंग अपॉन द बायोफ्यूल्स। हमारा फोकस शिफ्ट होता है एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स की, तो हमारे लिए और भी बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करना एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे एक्सेलरेट हो रहा है, इम्पैक्ट्स एक्सेलरेट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों इंक्रीज हो रही है, एंड साथ के साथ जो थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इसलिए सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स जो एग्रीकल्चरल वेस्ट से प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हमें ज्यादा हेल्प करेंगे इन ऑल्सो इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, क्योंकि बाकी जो बायोफ्यूल्स हैं शुगर केन, कॉर्न, अगेन सो ये फूड सिक्योरिटी से और कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एंड वी आर सीइंग इंक्रीज लॉस ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ग्रेटर लैंड रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग ऑल्सो। सो एट द सेम टाइम हमारे लिए सस्टेनेबल बायोफ्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। So again, we are seeing renewed focus on biofuels. अब immediately ऐसा क्या हुआ कि biofuels again they came under focus. So as we saw the impacts because of the Ukraine war, we saw global crude oil prices जो थे they shoot up, and again we are dependent upon the crude oil as a fuel. So that is why focus shifted on biofuels, that to sustainable biofuels as an alternative. So this is one of the reasons. And इंडिया की बात करें तो वी आर इम्पोर्टिंग 87% ऑफ द क्रूड ऑयल। सो अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो, एंड अगेन अगर ये एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव निकल के आता है तो हमारे लिए इवन बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो एक्सचेंज रेट चेंजेस होते हैं वहां पे हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, एंड दे वुड नॉट डेप्रिशिएट मच। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो भी हम रोक सकेंगे अगर डोमेस्टिकली हम इतने केपेबल हो जाएं कि वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल्स एंड वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट्स इन एनी व्हिच वेज। क्योंकि अगर हम एट द सेम टाइम इंपोर्ट्स के ऊपर 87% डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं रिस्क की सिचुएशन भी है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई डिसरप्शन एज वेल। So definitely biofuels energy transition में भी help करेंगे। So most biofuels today they are blended with petrol. तो हम blended form में आज के टाइम में उनको use करते हैं with petrol, like हम we talk about ethanol blended petrol. So right now they're used in blended form, like instant India में 10% of the biofuels हम use करते हैं blended biofuels with petrol. And some experts feel कि we need to accelerate the electric vehicle adoption also, and developing alternatives like green hydrogen can also be one of the sustainable and sustainable alternative to crude oil. So जो तीन फाउंडिंग मेंबर्स हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के, दे आर प्रोड्यूसिंग 85% ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल एंड दे आर कंज्यूमिंग अबाउट 81% ऑफ इट। सो विद दिस renewed push to enhance the biofuel use and their production, so USA ने भी it latest amended their renewable fuel standards so that substantially वो increase कर सके the production of biofuels and substitute it with the crude oil imports. So India ने भी similarly we have announced setting up of 12 new refineries as early as 2018 with the aim to meet 20% ethanol blending by 2025. So International Energy Agency it predicts कि about 2/3 जो global biofuel demand है that will be coming from 3 emerging economies. So that would be India, Brazil and Indonesia. So आने वाले टाइम में बायोफ्यूल की डिमांड भी मैसिवली इंक्रीज होने वाली है. So they are also one of the better options when we talk about exports also. So again, these 3 countries, we also have ample domestic feedstocks, additional production capacity, relatively low production cost, and package of policies that can leverage that can leverage to increase demand. So domestically bhi we can basically generate the capacity generation. So Middle East Economic Corridor ट्रेड पे कैसे इम्पैक्ट करेगा. सो अगेन हमने आज इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो विल जस्ट कवर दिस वन एस्पेक्ट कि
कैसे ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो इंडियन गुड्स शिप्ड बाय दिस रूट they could arrive in Europe in 10 days, which is 40% faster than through the Suez Canal route, जो अभी हम currently follow करते हैं. So reduction in the travel time, that would be again giving a major boost to the increase in the demand for different goods. So what is this corridor? This we've already seen. And so geopolitics at play. So we see it is often been believed that again, this is an alternative to China's BRI from the Indo-Pacific, which is expanding in Indo-Pacific to West Asia. So from the geopolitical angle, we'll be talking about counter to BRI. Again, China ke counter mein this has been put up. Israel and Gulf ties की जब हम बात करते हैं तो Saudi Arabia and Israel, they do not have diplomatic ties, primarily because जो differences exist करते हैं in their opinion about the Israel-Palestine conflict. So एक ही हमारे लिए challenge होगा connectivity यहाँ पे इस region, इस दो countries बीच में develop करना. So Israel has officially ties only with Egypt, so Jordan, UAE, Bahrain, and Morocco in Arab region. So in this slide, जो transit network है, which seeks integration multiple fronts पे assumes particular significance. So इसकी वजह से again सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में टाइज भी फॉर्मलाइज किए जा सकते हैं, तो वहां पे भी एक हमें बूस्ट देखने को मिल सकता है जो इस रीजन में और स्टेबिलिटी बूस्ट करेगा. सो वी सी कि सऊदी अरेबिया जो है वो वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर है ऑफ ऑयल, एंड यूएई जो है इट इज बीइंग वेस्ट एशियाज डोमिनेंस फाइनेंस सेंटर. तो जो दोनों कंट्रीज हैं अपने आप को कहीं ना कहीं दे प्रोजेक्ट एज की लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेड हब्स बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट. सो दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल एरिया. Winds of change in global governance. So let's see what are the changes happening. So from last year's climate change conference जो इजिप्ट में हुई to the G20 summit अगर हम बात करें 2023 में, there is growing consensus among the world's power that the agenda of developing countries should be given top priority. So this is, we can say, one change in the global governance which is happening when we talk about giving more weightage to the voice in the south of global south, to the voice and again the interest of the global south. उसकी वजह से we saw कि African Union was also made a part of G20, जिसकी वजह से again the weightage of the countries which forms a part of the global south that increases in G20. So again these things they need to, again these areas, it becomes an important agenda that voice of the developing countries भी आप बोल सकते हो, they need to give in top priority. So एक ये हमें ग्लोबल लेवल पे चेंज देखने को मिल रहा है. So fall in the tea prices hits the small farmers. So यहाँ पे अगर हम टी कल्टीवेशन की बात करें, टी प्लांटेशंस की बात करें, फर्स्टली अगेन सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस है फेवरेबल फॉर द टी कल्टीवेशन. इंडिया में कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे टी कल्टीवेशन, टी प्लांटेशंस एग्जिस्ट करती है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डिफरेंट टी वैरायटीज पता होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन लाइंस को ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है. डिफरेंट आपको अगेन मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे क्वेश्चन था. डिफरेंट टी वैरायटीज थी, यू नीड टू मैच देम विद द स्टेट्स. So small growers, Nilgiris, they have been realizing the prices, they are less than the cost of production. So in a way, they are incurring losses. So Tamil Nadu में we see tea cultivation. So main tea growing region जो है Tamil Nadu में, they have been staging a hunger protest for more than 2 weeks now, demanding reasonable prices. Then आपको भी पता होना चाहिए कि क्या टी के ऊपर MSP दी जाती है या नहीं दी जाती है. So कल भी हमने ये पॉइंट रेज किया था कि जब हम बात करते हैं कंट्री की रैंकिंग के बारे में, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. सो एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो भी इन कॉन्सोनेंस, इन सिंक इंक्रीज होनी चाहिए विद द इंक्रीज इन जीडीपी. देन ओनली वी कैन से कि असलियत में एक्चुअल सेंस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है. क्योंकि
अगेन इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम हमारी इट इज अराउंड $2,400. So that is at a very lower level when we compare it with the other countries, and we are at the fifth largest economies for it. We say that India is the largest growing economy, is the fastest growing, largest emerging market in the world. But फिर हमारी per capita income इतने lower level पे क्यों है? वहां पे हमें increase देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? So again, वो reason भी it is because of the increased income inequality in India. Now we come to Financial Express. So let's see the important and objective topics for the day. So special session of the parliament is going to take place in the new parliamentary building. So government to convene all party meeting on the eve of special parliament session. Special parliament session constitution में explicitly mentioned नहीं है. Article 85 deals about it when we talk about the process of summoning the parliament. So president has the power to issue the summons to the parliament to call for a parliamentary session, and this is not a discretionary power. And ये important है कि special session is not explicitly mentioned in the constitution, but indirectly उसकी बात की जाती है in the history when we talk about कि special parliamentary sessions क्यों किए गए. तो that was to mark some landmark events, like this session is going to mark 75 years of our success, and 75 years starting from the संविधान सभा. We are going to trace जितनी भी achievement, जो भी challenges आए, कैसे हमने face किया. So it is to mark that. So Insolvency and Bankruptcy Board of India is open to innovation to reduce the delays. So जिस चीज को काउंटर करने के लिए, जिस चीज को सॉल्व करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आया गया था, वो भी उन्हीं लाइंस पे उसने उसी चीज को फॉलो किया. एंड वी कांट से कि इट इज बीन अ मेजर सक्सेस, क्योंकि जो पहले प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम आईबीसी के आने के बाद भी सॉल्व नहीं हुई. So जो major objectives हैं IBC के, they're not only recovery, also revival, rehabilitation as well. So it was always thought as a resolution mechanism and not as a recovery mechanism. So obviously ये सोचा गया कि दो possibilities है जब हम बात करते हैं, या तो आप लिक्विडिटी के साथ जा सकते हो या चीजों को रिजॉल्व कर सकते हो. बट यहाँ पे हमने देखा कि आईबीसी में जो अगेन जो मेजर आउटकम्स निकले, दैट वर इन द फॉर्म ऑफ रिकवरी. मतलब जो प्रोजेक्ट्स थे, जो एसेट्स थे, उनको लिक्विडेट ज्यादा किया गया इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग थिंग्स. एंड आईबीसी इट इज इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द रिकवरी मोड. मतलब अगेन जब हम बात करते हैं द टाइम टेकन टू रिजॉल्व द केसेस, वहां पे भी हमें इतना ज्यादा वी कांट से कि लेसर टाइम वाज टेकन. तो एक ये भी रोड ब्लॉक है, वी नीड टू वर्क अपॉन हेयर एज वेल. And we are trying to speed up the process and open to the suggestions from different stakeholders. So reforms in the IBC 2016 model की आप बात कर सकते हैं. We need to know the indirect benefits, and even if that is bigger, so indirect benefits bigger है, but पहले हम focus करेंगे क्या direct benefits हैं जिन पे हमारा main जो aim है, main objective है जो IBC का है. And again behavioral change लाना, that is important. So it is called the change in the creditor and the borrower relationship. So fueling the future, we talked about global biofuel lines today in detail. Now here we're talking about how hydrogen is going to power the big machines, both on road and off road, to zero carbon world. So again, green hydrogen is also one of the sustainable and reliable alternatives to crude oil. So how it works, electrolysis plants जो हैं, they use the electricity to separate water into hydrogen and oxygen molecules. So this is step one. And this process is called electrolysis. Second is the required electricity. It could be then harnessed from the solar panels and the wind farms. जो electricity भी चाहिएगी, again that needs to be harnessed from
रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये नहीं कि कोल बेस्ड पावर प्लांट से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं देन उसको हम यूज कर रहे हैं टू जनरेट हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। सो अल्टीमेटली इतना उसको कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी भी हमें यूज करनी है वो इट नीड्स टू बी जनरेटेड फ्रॉम रेन्यूएबल सोर्सेज। थर्ड इज जो टैंकर्स ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन गैस टू द फोर पोर्ट्स व्हिच हैव बीन अडेप्टेड विद स्पेशल हाइड्रोजन पंप्स। Fourth is hydrogen refuels the zero carbon vehicles and the machinery. Fifth is hydrogen engines, they work on an internal combustion principle. So hydrogen and jo air hai, they are ignited by spark plugs powering pistons. Lastly, steam is the only waste product that is generated out of this whole electrolysis process. So this is an important process. Again, this can be asked in prelims. So when we talk about reigning and how we are actually reigning in India's space sector, so यहाँ से again starting from the Aryabhat, so India launched the first satellite in 1975 and we called it the Aryabhat, which is again to celebrate Indian mathematician. So ISRO designed and assembled Aryabhat. It was launched through the Russian Cosmos 3M rocket. So main जो aim था इस mission का, that was to study Earth's ionosphere amongst other things. Then we talk about Rohini satellite, RS-1 or SLV-3. So this was another milestone जो हमने achieve किया 1980 में. So we successfully launched the Rohini satellite, which was capable of diverse applications, चाहे आप communications की बात करें, resource mapping to television. So this was another key milestone which we achieved in 1980. Then PSLV 1994 में this marked the debut of PSLV, which is India's first launch vehicle, which was equipped with the liquid stages. So since that it has emerged as a reliable launch vehicle, having lifted missions like Chandrayaan-1 2008 में and Mars Orbiter mission in 2013. Then GSLV, we came up with GSLV, which is geosynchronous satellite launch vehicle. It is capable of placing heavier payloads in the orbit than the PSLV. Then Chandrayaan-1 2001 में we launched its first lunar mission and it confirmed the presence of water ice on the moon. Then Mangalyaan launch किया गया 2013 में, MOM mission जिसको हम बोलते हैं, and ISRO became only the fourth space agency to reach the Martian orbit and the first to do so in its first attempt. So mission cost was merely $73 million. So इतने कम amount में, मतलब we were the cheapest, or we can say that the cost हमने दी for this MOM mission, that was the cheapest when we compare with all different successful missions. So we were the first one to, land successfully on Mars in the first very attempt. Then mission Shakti की हम बात करेंगे. DRDO it basically successfully neutralized a satellite in space using its anti-satellite mission, जिसको हम mission Shakti बोलते हैं. And this was achieved in 2019. And right now we talk about Chandrayaan-3 mission. We are the first successful country to launch to land, soft land on lunar South Pole. And upcoming missions are Gaganyaan. And right now, again, our eyes on, they are on Aditya L1 mission. So far it has been successful. So that's how you can basically trace the different developments in Indian space sector. So that's all for the day. Thank you so much for joining us. Do subscribe to the channel and stay tuned for daily newspaper analysis videos.